जय हिंद। मैं मेजर सुनील डागर आज आपको 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज के बारे में बताने जा रहा हूं। लाखों एस्पिरेंट्स का एक सपना होता है एसएसबी क्लियर करना। Few aspirants want to clear SSB because they want to become officers, और कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो एसएसबी क्लियर सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं ताकि वो जज कर सकें अपने आप को, क्या उनमें लीडरशिप वाले ट्रेट्स हैं या नहीं, क्या उनमें ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं या नहीं। तो इन दोनों टाइप के कैंडिडेट्स को ये जानना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली ये ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं क्या और इनको इम्बाइब कैसे किया जाता है। तो स्ट्रेट अवे लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज ऑफिसर लाइक क्वालिटीज एंड हाउ टू इम्बाइब देम। तो ये जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू 4 फैक्टर्स: फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3 एंड फैक्टर 4। फैक्टर 1 आर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, फैक्टर 2 social adjustment, factor 3 social effectiveness and factor 4 dynamic। अब ये क्या हैं, ये 4 फैक्टर क्या हैं, इनके सब पार्ट्स क्या हैं और एग्जैक्ट 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज क्या हैं, विल सी सब्सिक्वेंटली वन बाय वन। लेट अस टारगेट राइट। सबसे पहले हम समझते हैं इफेक्टिव इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस हर बच्चा, हर पेरेंट जानता है कि इंटेलिजेंस क्या होती है। इनफैक्ट आईक्यू टेस्ट करने के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं, काफ़ी सारे टेस्ट हैं। जो बच्चे नीट जेई का एग्जाम देते हैं, दे आर जनरली कंसिडर्ड टू बी वेरी हाई ऑन आईक्यू, उनका इंटेलिजेंस काफ़ी हाई माना जाता है। बट इफेक्टिव इंटेलिजेंस इससे थोड़ा अलग है। इसको एक बड़े सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आर्किमिडीज लॉ, बायनेंसी प्रिंसिपल, ऑलमोस्ट हर साइंस के स्टूडेंट को पता होता है व्हाट इज बायनेंसी प्रिंसिपल, राइट। लेकिन सपोज कोई एक वाटर बॉडी है, वहां पे देयर आर 2 स्टूडेंट्स एंड दे हैव टू क्रॉस दैट वाटर बॉडी। एक है साइंस वाला स्टूडेंट हु नोज आर्किमिडीज लॉ, हु नोज बायनेंसी प्रिंसिपल, लेकिन एक दूसरा है जिसको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं। लेट्स से ही इज अ कॉमर्स स्टूडेंट और ही इज अ ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट। अब जो साइंस वाला है उससे हमारी एक्सपेक्टेशन होगी कि यह हाई इंटेलिजेंस वाला बंदा है, ये क्रॉस करेगा। लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है कि वो प्रिंसिपल्स और लॉज के चक्कर में पड़ा रहता है। लेकिन एक दूसरा बच्चा जिसको ज़्यादा प्रिंसिपल्स की जानकारी नहीं है, लेकिन आसपास से लकड़ियाँ इकट्ठी करता है, उससे एक राफ्ट बनाता है और रिवर क्रॉस कर जाता है या वाटर बॉडी क्रॉस कर जाता है। So this second chap has more effective intelligence than the first one. So in armed forces, we need people with high effective intelligence, not just intelligence. But it doesn't mean कि हमें intelligence वाले बंदे नहीं चाहिए. Definitely we need intelligence. But at the same time, we pay more focus on effective intelligence, right? Because practical solution चाहिए. And that is the beauty of SSB. We do not need people who can mug up, people who can say mug up lots of laws and principles. We need people who have effective intelligence, right? तो आप effectiveness कितनी लाते हैं अपनी इंटेलिजेंस से, that is important. तो आपका जो GTO टेस्ट होता है, that largely tests your effectiveness. आपने बहुत कुछ लिखा साइकोलॉजी में, आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने भी काफी कुछ बोलेंगे, लेकिन जब ग्राउंड पे आते हैं, can you implement all that? So that is tested. So that's effective intelligence. I hope you have understood, right? Second is reasoning ability, right? An officer or a leader is supposed to reason out things. आपने लॉजिक देना है हर चीज का। तो जिस इंडिविजुअल में ज्यादा रीजनिंग, ज्यादा लॉजिकल एबिलिटीज होंगी, वो उतना ही अच्छा लीडर बन सकता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, हम हाथ जोड़ के प्रेयर करते हैं, मुस्लिम्स हैं वो हाथ खोल के प्रेयर क्यों करते हैं, राइट? व्हाई आर वी अ डेमोक्रेटिक कंट्री? व्हाई शुड वी बी रिपब्लिक, राइट? हमारे इलेक्शंस हर स्टेट के अलग अलग टाइम पे होने चाहिए कि व्हाई शुड, और हमारे इलेक्शंस एक ही टाइम पे होने चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सो दीज आर वेरियस वेज वेयर वी टेस्ट आर, I mean these are various aspects or various incidents when we check our reasoning, right? हर चीज के लिए लॉजिक हमारे पास होना चाहिए, and this is tested through various tests, right? Be it psychology, be it GTO, be it interview,
हर जगह पे आपकी रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट की जाती है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। कैन यू ऑर्गेनाइज योर रिसोर्सेज, कैन यू ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। आपके पास आइडियाज बहुत हैं, आप प्लान कर पा रहे हैं, बट उस प्लान को क्या आप एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं? क्या आप अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज्ड वे में रख पा रहे हैं? राइट? क्या आप ह्यूमन रिसोर्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? क्या आप मटेरियल रिसोर्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? वो सब टेस्ट किया जाता है एसएसबी। राइट? इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल अगर हम लें जीटीओ में, लार्जली लोग मानते हैं कि ये बड़ा एक फिजिकल टेस्ट है। दैट्स अ मिथ। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल इटसेल्फ इज टेस्टिंग योर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। आपके पास 10 ऑब्स्टिकल हैं, दे आर प्लेस्ड इन रैंडम फैशन। एक के बाद 4 भी हो सकता है, 4 के बाद 8 भी हो सकता है, 8 के बाद 10। तो सीक्वेंस में भी हैव हजार्ड। बट क्या आप जब 3 मिनट में आपको वो पूरा सर्किट कंप्लीट करना है, तो कैन यू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स, कैन यू प्लान इट इन सच अ मैनर कि आप 3 मिनट में मैक्सिमम मार्क्स ले पाए? तो individual obstacle is not at all of physical test. It is test of your mental abilities. It is test of your organizing abilities. वो कैसे है, उसकी डिटेल क्या है, that will subsequently cover in the later videos, right? Then power of expression, very important. You are going to become an officer, you should have power of expression. You want to convey a lot of things to your superiors. आपके जो सबॉर्डिनेट्स की प्रॉब्लम है, आपके कुलीग्स की प्रॉब्लम है, यू वांट टू कन्वे दोस टू योर सुपीरियर्स। जब तक पावर ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होगा तो कैसे कन्वे करोगे? राइट? आपको 1000 जवानों के सामने सामने खड़े होकर ऑर्डर देने हैं। टिल द टाइम यू हैव पावर ऑफ एक्सप्रेशन, आप कैसे ऑर्डर देंगे? एंड विदाउट ऑर्डर्स नोबडी इज गोइंग टू मूव एन इंच। आपके सोल्जर्स 1 इंच भी मूव नहीं करेंगे जब तक आपका ऑर्डर क्लियर नहीं होगा। सो योर पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, राइट? सो दीज आर फैक्टर 1 components, right? Second, social adjustment, right? Socially, क्या आप पूरी कम्युनिटी के साथ, सोसाइटी के साथ एडजस्ट कर पाते हैं? क्या आप पूरी यूनिट के साथ एडजस्ट कर पाते हैं? राइट? आर यू अ टीम प्लेयर और आर यू अ सेल्फिश इंडिविजुअल गोल ओरिएंटेड पर्सन? राइट? तो दैट्स अ बिग डिफरेंस। कॉर्पोरेट में और आर्म फोर्सेस में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि कॉर्पोरेट में वी जनरली टॉक अबाउट आई, मी, दैट्स इट। मैंने ये किया, मैंने इतना कुछ अचीव किया, दीज आर माय क्रेडेंशियल्स। इन आर्म फोर्सेस वी ऑलवेज टॉक अबाउट वी अचीव दिस, आवर टीम accomplished this, so this is how we talk. So social adjustment, very social adaptability, very important। क्या आप पूरी सोसाइटी के साथ अडेप्ट करके उनके विचारों में विचार मिला सकते हैं? राइट? So again, how is social adaptability, how this particular factor is tested? It is tested through your PPDT in screening। social adaptability, आप जो है 15 बच्चे एक साथ अलग अलग स्टोरीज बना रहे हैं, बट can you come to some common ground? Can you discuss it in a very amicable fashion? क्या आप एक दूसरे को काउंटर करने की बजाय एक पोलाइट वे में डिस्कस करके एक मुद्दे का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? ग्रुप डिस्कशंस, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, जीटीओ के जितने भी टास्क हैं, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, फाइनल ग्रुप टास्क, स्नेक रेस, इन सब में सोशल एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होता है। राइट? Then cooperation, can you cooperate with others? Right? अभी ग्रुप डिस्कशन है, उसमें somebody is giving totally different solution from what you were expecting, या आपका जो थॉट प्रोसेस है उससे बिल्कुल अलग जा रहा है। So do you want to suppress that person or you want to cooperate? Okay, this is your perspective, I have a different perspective, let us both collaborate, let us both understand and come to a common consensus, right? That happens in group discussion। जब आप ग्राउंड पे हैं तो क्या आप एक दूसरे से कोऑपरेट कर रहे हैं? क्या स्नेक रेस में आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं? आर यू पुलिंग ईच अदर, आर यू पुशिंग ईच अदर? एंड लेट द टीम रीच द फाइनल स्टेज एज अ यूनिट। तो दैट इज कोऑपरेशन। तो आपका पूरा जीटीओ, आपका हर साइकोलॉजी का जो भी एक टेस्ट है, उसमें कोऑपरेशन बड़े डिटेल में टेस्ट किया जाता है। राइट? And interviewing officer, if he or she feels
कि आपकी कोऑपरेशन लेवल टेस्ट करने हैं, तो दैट इंटरव्यूइंग ऑफिसर में गिव यू सर्टेन सिचुएशंस आल्सो, राइट? तो कोऑपरेशन अगेन साइकोलॉजिस्ट भी चेक कर सकता है आपका, जीटीओ भी चेक करता है और इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी चेक करता है, राइट? नाउ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. Sense of responsibility again involves largely two sub-factors. One, do you have a sense of responsibility towards yourself? And do you have a sense of responsibility towards your team? Right? That again is tested at each and every level. जब आप प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में बल्ली फट्टे की मदद से यू आर ट्राइंग टू रीच योर ऑब्जेक्टिव और आपको एक लोड भी दिया गया है, इन दी एक्सुबरेंस almost all the students or all the say aspirants are just thinking of ideas देने हमें, और ideas देके हम ये टेस्ट क्लियर कर लेंगे. However, the thing is, it is not only the ideas, it is rest of the officer like qualities also. They are very important. Teamwork very important. Now this sense of responsibility is very important. आप अपने टीम वाले बंदों को साथ में लेके चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो? Are you having a sense of responsibility towards your team? या सिर्फ आप अपने इंडिविजुअल गेन की तरफ भाग रहे हो? Second, we tend to forget our load or our resources at one end. बल्ली फट्टा यूज किया, रोप को स्टार्टिंग लाइन पे ही छोड़ दिया. Now where is our sense of responsibility? The instructions are clear. You have to take your entire material and load with you. आप मटेरियल पीछे छोड़ दिया है. You thought कि मैं आइडिया दे लेता हूँ, let somebody else take on the responsibility of carrying the material. No, it doesn't happen that way. You are responsible for your entire team, material as well as load, right? So there comes sense of responsibility. Snake race, again, sense of responsibility. आप अपने team members को obstacle clear करा रहे हो कि नहीं करा रहे हो, right? So that ways, sense of responsibility is tested again at various levels. And this sense of responsibility is towards yourself as well as towards your team. It involves your men, material, as well as the load, right? Next, initiative. So this comes under social effectiveness. Initiative. Now this is so very visible the moment the candidates land in the academy. जैसे ही बस आती है, उस पे सारे एक दूसरे की मदद करते हैं, लोड कर दो जी, बैग मैं लोड कराता हूँ, अनलोड कराने ओके मैं कराता हूँ, इनिशिएटिव. But it is not there that your initiative is being checked. It will be checked on ground. However, क्या इनिशिएटिव सिर्फ ग्राउंड पे काम करने से बात बनेगी? नो. इनिशिएटिव को अगर इम्बाइब करना है, इट स्टार्ट्स एट योर होम, इन योर स्कूल, इन योर wherever you go in your daily life. आप क्लासरूम में बैठे हैं, लाइट ऑन है, सब भाग गए, कैन यू स्विच इट ऑफ? आपकी क्लास बड़ी हैफजर्ड फैशन में, चेयर कहीं पड़ी हुई है, टेबल कहीं पड़ी हुई है, कैन यू टेक इनिशिएटिव एंड पुट देम इन एन ऑर्डर? टीचर आस्क फॉर somebody to participate in the next debate competition, can you raise your hand and say okay ma'am I'll do it, or sir I'll do it? That is initiative. So initiative has to be imbibed. Last day में initiative नहीं आएगा. Believe me, those GTOs, those interviewing officers and psychologists, they are very very sharp. In case you are trying to fake it, सिर्फ वही इनिशिएटिव ले रहे हैं, घर पे कोई इनिशिएटिव नहीं लेना, क्लास में कोई इनिशिएटिव नहीं लेना, स्कूल में कोई इनिशिएटिव नहीं लेना, it won't work that way. You have to imbibe these initiative qualities, the quality of initiative, right? So that starts with your daily routine. हर रूटीन में अपने में इनिशिएटिव की कोशिश करो. कुछ भी करना है, your hand should go up and it should convey that okay I'm ready to take this initiative, right? So that's initiative. Ready to do anything and everything, right? Then is self-confidence, right? I mean, self-confidence सबको पता है क्या है, right? Only thing is, तो प्रैक्टिस करना थोड़ा सा मुश्किल है. जैसे ही पब्लिक दिखती है और आपको सामने जाके बोलना है, तो घबरा जाते हैं. It is believed that the second largest fear in the world is public speaking. सबसे पहला the fear of death. However, the second is public speaking. अच्छे खासों के पैर कांपने लग जाते हैं. So that is why SSB has one element that is called
lecture it. So lecture it में 3 minutes you will be given to prepare the topic and 3 minutes you have to speak. So there your self confidence is checked. Apart from that, group planning exercise है, group discussions हैं, PPDT है, right? इन सभी जगह पे आपको पब्लिक के सामने बोलना है, अपने पार्टिसिपेंट, अदर पार्टिसिपेंट्स के, अदर एस्पिरेंट्स के सामने बोलना है. तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? Then speed of decision, again very very important, and it is more important for Air Force, because in Air Force within split of seconds you have to take decision, and if you do not take a decision in split of a second, the enemy may take it and you're gone, right? Because the jets, they run at speed of Mach, right? At the speed of sound, more than the speed of sound. तो उस स्पीड पे जब आप एक दूसरे को इंगेज करने जा रहे हैं, योर डिसीजन मेकिंग हैज टू बी रियली क्विक. So that speed of decision making is checked in SSB thoroughly, right? Both in in Army, Air Force as well as Navy. Largely in Air Force, very very important for Air Force aspirants. Speed of decision is extremely important, right? अब ये कहाँ पे चेक होता है, कैसे चेक होता है? The interview में तो definitely interviewing officer is going to give you number of say situations. वहाँ पे आपकी डिसीजन मेकिंग टेस्ट हो रही है, तो आपको क्विकली डिसीजन लेना है, एक बात. दूसरा, when you are going through command task, you are the commander, you got your subordinates, it is only you who can take decision. So subordinates will not be allowed to take decision on your behalf, right? So again, you not only have to take a decision, you have to take it quickly, right? Apart from that, all these PGTs, HGTs and FGTs, all these are testing your speed of decision, right? Next, ability to influence the group. As the name suggests, it is done in a group setting, right? So wherever you have group task, whether it is PPDT, whether it is GPE, group planning exercise, whether it is group discussion, and by the way, you go through 2 group discussions, right? So whether it is group discussions, whether it is all those PGT, HGT, FGTs, at that time you are in a group. Also snake race, you are in a group. In that group, do you have the ability to influence the group? Group discussion में आप कुछ बोल रहे हैं, आपके जो और participants हैं वो कुछ और ही tangent पे जा रहे हैं. Can you influence them? And without being bossy, can you say get them on the same platform as you, right? So that is tested through ability to influence the group. In fact, जब आपको group discussion पहला दिया जाता है तो आपको 2 topic दिए जाते हैं. Out of those 2 topics, you have to select one, right? So as a group, you have to select that one topic. Can you be the one who influences the group? Can you be the one who gives out reasoning and say that, look friends, we should discuss on topic number 1 because of X, Y, Z reasons, and then they get inspired and they feel, okay, let us go ahead with it. So that is how you influence the group, right? So that's very important. Then is liveliness. Now it may seem a very, let's say, not so important kind of a officer-like qualities. However, it is extremely important. Tomorrow, once you join armed forces, you don the uniform, you will be responsible for life of at least a few hundred soldiers. That time, when you are put against the odds, कल को battle होगी, war होगी, when you are put against the odds, and you have to take decision of life and death of your subordinates, your teammates, that time you have to keep a smiley face. If they find कि officer चिंता में है, then the morale of the troop go down. The morale goes down like crazy. But if you are lively, the situation is tough. Enemy are 4,000 in number with their 45 tanks. However, you are just a company. You are hardly 120 soldiers. But still, you keep your liveliness and you say, don't worry, I'm there and we'll defeat them. We are 120, but we are more powerful than those 4,000 people, 4,000 enemies, right? So if you maintain that liveliness,
your troops will feel more confident. They know that the officer is in command of things. He knows what to do, right? So your liveliness is extremely important. आप post पे हो गए, you may not get a large number of logistics, resources भी कम होंगे, but still, can you keep the morale of the troops high? And your one habit, that is staying lively, can help them a lot, right? So that is tested. So keep a smile. When you go for SSB, keep a smile. That doesn't cost you anything, right? Then is determination. आप में कितनी ताकत है बार बार उठने की. आप गिरते हैं फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं फिर उठते हैं. अब ये डिटर्मिनेशन कहाँ टेस्ट होती है? आपके टैट में. जब आपको पिक्चर दिखाई जा रही है तो आप कैसी स्टोरी लिख रहे हैं, उसमें आर यू शोइंग योर डिटर्मिनेशन और नॉट? जब आप जीटीओ टास्क कर रहे हैं, राइट, यू आर पुट अगेंस्ट ऑड्स, आपको समझ में नहीं आ रहा, सोल्यूशन नहीं आ रहा टीम को, बट आर यू डिटर्मिन्ड कि नहीं नहीं, लेट अस पुट आवर हेड्स टुगेदर एंड लेट्स फिनिश द टास्क, राइट? व्हेन you are doing individual obstacle, or let's say snake race, you fall down by mistake, you fall down, but you don't care, you just rub it off and move on. That shows determination, right? Next, courage. Now this is something that is non-negotiable in armed forces. If you are found wanting on courage, then there's no place for you in the armed forces. A number of aspirants, the moment they see commando task, right, this thing an individual obstacle, right, the moment they see it, they feel that, okay, now our legs are shaking, we can't do it, they bypass it, and that is a strong indication to the GTO that the person lacks courage. And if you lack courage, you're gone. Armed forces will not take you if you lack courage. Whether you are a male aspirant or a female aspirant, you're gone, right? So lack of courage is absolutely non acceptable in the armed forces. It is non-negotiable, right? Okay. Now this courage may also mean your courage of wisdom, your courage of conscience. आपका पूरा ग्रुप एक ऐसे मुद्दे पर डिस्कशन कर रहा है जहाँ पे थोड़ा सा डाइसी है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से गर्ल्स ज्वाइनिंग दी NDA, National Defense Academy. Now the entire group is saying no, they should not be part of NDA. But you, in your conviction, you know that why not? Times have changed. Girls should be into the armed forces now, and NDA should be no, let's say, exception to it. So you are very clear that they are going in wrong direction, and you have that conviction that what I'm saying is absolutely right. So do you have the moral courage to go against the entire group and say, no, gentlemen, I think we are making a mistake by not accepting the fact that NDA is meant for girls also. So you stick to your point. There's a lot of difference between being stubborn and having the moral courage. So even it is not just the physical courage, it is also your moral courage, right? That is also tested. So in group discussion, again, your courage can be tested, right? Then is your stamina, right? Stamina, my God. You go for psychology test, you have to write 12 stories back to back, 30 seconds of picture, 4 minutes of story, right? 30 seconds of picture, 4 minutes of story, 30 seconds of picture, 4 minutes of story, back to back. Then what? Again, within 1 minute, you have to see 4 words and write sentences. So 15 seconds, you have to watch the word also and write the sentence also, right? So you get 60 words and just 15 minutes. Then you get, immediately you get SRT, 60 SRTs and just 30 minutes. And then you have to write self-description. So back to back, you are under pressure, right? But do you maintain that enthusiasm the way you had in the first story of TAT, right? So your stamina, does it go down or you are able to maintain it? So it is not only your physical stamina, it is also your mental toughness, your mental stamina, right? So that is tested, your mental strength is tested in your psychology test. Then you go to GTO. Again, back to back, you are put under test. There's a battery of 9 tests in GTO. राइट, तो बैक टू बैक टेस्ट मिल रहे हैं आपको. अब उस टेस्ट में क्या आप अपनी वही स्ट्रेंथ, वही जोश, वही स्टेमिना रख पा रहे हैं कि नहीं? So that's very important because again, once you go for
battle or for war, right? That time your stamina is at stake. Your stamina is being tested, right? I'm sure all of you know what Captain Vikram Batra said when he say defeated the enemy at one particular hill. He said, "Ye dil mange more." Right? So he still had that courage. He still had that josh. He still had that stamina. That I'm able to say defeat the enemy at one peak. I want more. Once I do that, again I'll want more. Right? So that is the kind of stamina armed forces require. Right? So those are the officer-like qualities. Right? If you want to know the process, there are so many videos on the YouTube. Right? So process you'll anyhow get to know. But if you want to imbibe these officer-like qualities, if you want to inculcate them, then you need slightly longer time. And please do not waste any time. Do not wait for the final result to come. Return का result की wait मत करो. You must start preparing for SSB now. In fact, आपकी आधी characteristic, आधी quality तो आपकी पिछले 9-10 साल में बन ही चुकी होंगी. However, there are certain things that can be worked upon in 2 to 3 months. अभी आपके पास लगभग 4 से 5 महीने हैं before you appear for SSB. So it is the right time that you start preparing for SSB. So start preparing now before it gets too late. Last 15 days of SSB preparation will not be of much help to you, right? So start preparing now. And if you want that Lead Academy should assist you, please call us on this number 7015082708. Lead Academy, which is in Sonipat, Sector 15, Main Market. You can come to us. We'll help you imbibe these officer-like qualities. Now, there are various simple mechanisms, simple methods through which you can imbibe these qualities. We do not require rocket science to imbibe these qualities. These are simple tricks, simple methods. However, you need time and you need to put in efforts. Without efforts, you just cannot have these officer-like qualities. So if you want to imbibe them, contact us straight away and we'll be happy to be part of your journey. हमें बड़ी खुशी मिलेगी अगर हम आपको एक एस्पिरेंट से और एक ऑफिसर के बीच में जो एक खाई है उसको हम ब्रिज करा पाए. तो जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक.